Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। A warm welcome, Rajiv. Thanks. और अब हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Domestic stocks climbed around 2%. Sensex finishes above 57,800 mark. Nifty closes near 17,300. The rupee appreciates 46 paise to deal below 76 rupees per US dollar. Global equity indices log robust gains and Brent crude prices hover around $104 per barrel. घरेलू सूचकांक लगभग 2% की बढ़त में रहे। सेंसेक्स 57,800 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 17,300 के करीब रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 46 पैसे की मजबूती से 76 रुपए प्रति डॉलर के स्तर से नीचे आया। वैश्विक शेयर बाजारों में रही तेजी और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $104 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से। वैश्विक बाजारों में तेजी के अनुरूप सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 2% के उछाल में रहे। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में प्रगति के संकेतों के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी रही। 3 वर्षों में पहली बार अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा की गई ब्याज दर में बढ़ोतरी अनुमान के अनुरूप रहने से भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। सेंसेक्स 57,800 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 17,300 के करीब रहा। कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.84% की तेजी से 1,047 अंक बढ़कर 57,864 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.84% की ही बढ़त से 312 अंक ऊपर 17,287 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.07% बढ़ा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.18% की तेजी दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today climbed around 2%. Both domestic key stock indices rose in sync with gains in global share markets. Global stocks climbed amid signs of progress in peace talks between Russia and Ukraine. First, U.S. Federal Reserve interest rate rise in 3 years, which remained at expected level, also boosted the investors' sentiment. The BSE Sensex closed above 57,800 points, while the NSE Nifty ended near 17,300 level. The Sensex climbed 1,047 points or 1.84% to settle at 57,864. The Nifty also was up by 312 points or 1.84% to trade at 17,287. In the broader market at the BSE, the mid-cap climbed 1.07% and the small-cap index surged 1.18%. In the Sensex SPAC, 28 out of 30 companies logged gains. HDFC was the top gainer as it rose 5.6%, followed by Titan, which added 4.5%. Kotak Bank gained 3.3% and Reliance climbed 3.2%, while Infosys fell 1.8%. In sectoral indices at BSE, 17 out of 19 sectors logged gains. Realty index gained the most as it added 3.1%, followed by energy and consumer durable indices, which rose 2.7% each. Finance index surged 2.6%, while the auto and BankX indices also added more than 2%.
On the other hand, IT and tech sectors logged losses up to 0.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,051 companies gained while 1,362 fell. Shares of 116 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो डॉलर में मंदी के बीच अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 46 पैसे मजबूत होकर 76 रुपए के स्तर से नीचे आता हुआ 75 रुपए 81 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.41% की गिरावट से 98.21 पर था। राजीव, आज हमने बाजार में 2% के करीब की बढ़त देखी है। कल भी 2% बढ़ा था बाजार। हालांकि यूएस फेड ने फैसला लिया है और फाइनली वो कदम उठाया है 0.25% अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का और इंडिकेशन दिया है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा पूरे वर्ष। तो कैसे देखते हैं आप, बाजार ने किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया है और आगे क्या आप रुख देखते हैं बाजार का? देखिए, 2 रीजन रहे हैं इस रिएक्शन के, बिकॉज मार्केट में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी इवेंट होता है, इवेंट से होने से पहले उसको लार्जली डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो पिछले साल जब इन्फ्लेशन यूएस में सितंबर और अक्टूबर में करीब उम्मीद से ज्यादा थी, तो वो उस टाइम इंडिकेशन फेड ने दे दिया था कि वो जो टाइटनिंग करेंगे वो वुड बी फास्टर। सो और उनके जो ब्रॉडर नंबर आए वो भी बेटर आए। सो ये मार्केट पहले से एंटिसिपेट कर रही थी और जब इवेंट होता है तो उसके बाद इवेंट के बाद एक अनसर्टेनिटी के जो बादल होते हैं वो हट जाते हैं। दूसरा रीजन होता है कि जिन लोगों ने शॉर्ट करा है वो अपनी कवरिंग के लिए इवेंट पे अपनी वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएंगे, अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करेंगे। तो ये 2 प्रमुख कारण रहे हैं कि आपने देखा कि बाजार में जैसी न्यूज आई और जिस तरीके की उम्मीद थी उस तरीके से हुआ। सिमिलरली जैसे ऑयल प्राइसेस जो थे जब वॉर शुरू हुई थी तो $85 से लेके बढ़ना शुरू हुआ ब्रेंट क्रूड और 132 तक गया था। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि रशिया और यूएस विल नॉट बाय द ऑयल, तो उसका जो वो इवेंट ओवर हो गया। इवेंट रिस्क जो प्राइस दिन होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, उसके बाद से नीचे आ गया। सो लार्जली जो बुरी खबर है वो इन शॉर्ट टर्म जो है वो प्राइस दिन होके थोड़ा सा एक रिलीफ रैली आती है। तो जो आपने अभी देखा है मार्केट में, अनसर्टेनिटी अभी भी है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉर, हाउ इट्स गोइंग टू शेप अप, कैसे डेवलपमेंट होंगी, कब खत्म होगा और कब जो प्रॉब्लम वो सप्लाई चेन को क्रिएट कर रहा है वो खत्म होगी, वो इशू रहेगा। So there were 3 reasons, as you mentioned 2. I'm adding the third one to it, Rajiv. Why the markets reacted in a very surprising manner and staged a smart recovery. One, of course, is that the markets were calmed because the U.S. economy is very strong, and these remarks were made by Jeremy Powell himself. And 2, the markets were oversold amidst heightened volatility. Is that also correct? Yes, partly reason is of course that they were oversold. Yeah. Because not only the US Fed, then because of the fears of what will happen in Russia. Because see, when these kind of events happen, you never know what's going to be the outcome. So what happens is, normally we see that not only the buying, the people who are sitting on the people move to the fence, people who have cash, and when I say people, it includes the global institutional investors also. They kind of stop their purchases. Once that happens, the impact cost of any trade becomes very high. And once the event is out of the way, those people who are sitting, because valuations tend to correct during this phase, any such event, then those valuations, because there would be some institution who would come and say, okay, fair enough, the risk is priced, and in long term these things are going to get settled. So it's a combination of many factors which ends up making market behave the way it behaves. But it does not mean that the risk is off the table. Risk is still pretty much high there, because you never know how the inflation is going to pan out for not only emerging markets, which are largely oil importers, but even for the developed markets where the supply issues are much, much, much bigger than as we are thinking at this point of time.
सो अगर हम कंपेयर करें सेंसेक्स को बाकी मार्केट से इन 2022 अभी तक, अगर हम कल तक देखें तो निफ्टी 2% गिरा था, जबकि यूके को छोड़कर बाकी मेजर मार्केट्स 7 to 15% गिरे थे। एंड ईयर टू डेट मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की 6% कम हुई है अगेंस्ट 12% ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में गिरावट के अगर उसके हम तुलना करें तो आपको लगता है कि जो आउट परफॉर्मेंस है हमारे बाजार की वो अब ये जो अनसर्टेनिटी खत्म हुई है यूएस फेड को लेकर, उसके बाद एफआईआईज को वापस नेट बायर्स बनने में प्रेरित करेगी? क्योंकि हमने देखा है कि कल नेट बायर्स थे वो आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखिए वो नेट बायर थे, हो सकता है वो शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन की वजह से भी नेट बाइंग हो। मुझे अगर आप इस बार का बिहेवियर देखें, जितनी सेलिंग आई है ये सेलिंग 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ज्यादा इन एब्सोल्यूट टर्म। उस टाइम पे जो सेलिंग हुई थी इससे काफी कम हुई थी, बट हमारी जो मार्केट की रेजिलियंस है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर फार बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ब्रॉडर इकोनॉमी। और एक और चीज देखनी पड़ेगी, कुछ मूलभूत चेंज हो चुके हैं हमारे नंबर्स में। हमारा रुपये उतना वीकन नहीं हुआ है जितना कि उस टाइम पे हुआ था। सेकेंडली, in terms of the stability in the taxation number, GST collections, all those things that happen today. So the government की finances हैं, not only they are far better placed in absolute term, but the machinery and the system and process which are in place today, वो बहुत बेहतर है। तो इसलिए निवेशकों को क्या होता है कि ये एक उम्मीद रहती है कि ठीक है ये 2 क्वार्टर शायद खराब आ जाए, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। तो जहां तक एफआई की बात है, आई डोंट नो व्हाट कैसे वो बिहेव करेंगे। नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे 2021 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो सेलर थे। इफ दे आर सेलर इन लास्ट 3 months of a calendar year, they tend to remain seller in the first 2 to 3 months. Probability high है, if I go by statistical evidence, कि अप्रैल onwards things should improve. But यहाँ एक छोटा सा कंडीशन आ जाती है कि ऑयल प्राइसेस जो ग्लोबल रीसेट हुआ है वो है कि जो पैसा जो था ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं कंपनी उनसे बाहर गया और उन्होंने क्या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनके स्टॉक्स में गया। सो वो सारी चीजें को देखते हैं, और अगर ऑयल प्राइस ज्यादा तो हो सकता है वो आप थोड़ा सा उसमें नेट बाइंग आते देखें, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज उनको जो रिएलोकेशन करनी थी वो सब है। आई थिंक इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 6 months. हो गया प्रोसेस, लेट्स सी। बट इवन इफ दे डोंट कम बैक इन अ मेजर वे, आई डोंट थिंक सो then it's going to be any major price distortion or trouble to the prices. Okay, Rajiv, you mentioned in your comment just now that the Indian currency did not lose much. In fact, yes, the Indian currency has just about lost 2%. Don't you think there are larger factors as to why the local currency is on a stronger footing? If I were to tell you that 632 billion foreign reserves are available with India, is that adding to the reason why the rupee is not losing that much? That is one thing. That is one reason. Of course, that is one of the main reasons that we are far better placed in terms of our forex reserve at this point of time. Secondly, other thing which also look at it, there's a lot of money which is waiting to come to India as soon as things stabilize. See, this PLE scheme, all those schemes, the impact of those. So there are talks about if Russia, India buys oil from Russia, all those things. Rupee might weaken, somebody might, some of these forex reserve might get it. All those fear probably at this point of time, the market is not showing those fears. So I absolutely agree with you that this reserve is very comfortable at this point of time. And given the fact that how the things are expected to turn in future, that is another reason why there has not been much panic as far as the currency market is concerned. Because the first indication for trouble which is going to create problem does not come in equity market, it comes in currency market. And as far as this time is concerned, there's hardly any. I mean, in fact, to be very honest, I was expecting some decline because our exports have to remain competitive. We only don't have to look at what has happened to India, rupee versus US dollar. We also have to look what happened to US, to the Chinese currency, US to others, because those people will become more competitive if our currency stays strong. So even if there's some weakness, which is orderly in nature, I don't think so there's going to be an issue. And this, of course, is a reflection
But at this point of time, there is no panic as far as investors are concerned. Rajiv, we'll continue our discussion after this short commercial break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। मार्केट मंत्रों में आपका फिर स्वागत है। राजीव जी, जैसे आप कह रहे थे कि पिछले 6 महीने से जो FIIs हैं वो मोर और लेस नेट सेलर्स रहे थे भारतीय बाजार में, यहां से पैसा बाहर निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि अक्टूबर में वी रीच्ड ऑल टाइम हाईज। सो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो एक बहुत ही इमर्जेंस हुआ है ये कोविड पीरियड में, आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी, इनका जो विश्वास है बाजारों में बना रहेगा? आगे आप कैसे देखते हैं इस एस्पेक्ट को? देखिए, मेरी उम्मीद है कि ये बना रहेगा फॉर अ सिंपल रीजन। नंबर शायद जो रेट ऑफ ग्रोथ और डिमैट अकाउंट है वो शायद थोड़ी सी स्लो भी हो जाए, बट एक और फैक्टर देखिए, अभी थोड़े दिनों में एक इशू आएगा LIC का, बिकॉज वो पॉलिसी धारकों के लिए खुला हुआ है, तो उससे एक बहुत बड़ा चंक आएगा मार्केट में, फ्रेश जो इन्वेस्टर्स आएंगे। उसमें से अगर आप टोटल बास्केट देखें, जितने लोग पिछले 2 साल में आए हैं, उसमें से अगर मैं 40% भी मानूं कि एक्टिव रहेंगे और मंथली SIP करते रहेंगे, तो देयर इज गुड एनफ मनी कि जो किसी शॉक को आने से रोक देगा, या अगर आया भी, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेलिंग का प्रेशर आता है ड्यू टू ग्लोबल इवेंट, उसको अब्जॉर्ब करने में बहुत पैसे लगती है। 2 चीजें होती हैं, जो इम्पैक्ट ऑन प्राइस होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि कितनी क्वांटिटी सेलिंग होने आई, वो किस फंड की आई, किस तरीके का फंड है, किन स्टॉक्स में आई। अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज द फाइनेंशियल स्टॉक्स विच हैव परफॉर्म्ड वर्स, बिकॉज FIs के पास 2 ही सेक्टर्स सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। एक तो वो है फाइनेंशियल्स विच इंक्लूड्स बैंक, एंड दूसरा है IT में टेलविंड इतनी ज्यादा है कि उनका चर्न अगर एक FI गया तो दूसरा आके ले गया। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे प्रॉब्ली जो हमारी जो डोमेस्टिक कभी एक इन्वेस्टर बेस तैयार होगा, दैट विल गो लॉन्ग वे इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी टू आवर मार्केट। दूसरा और भी है कि आपके पास एसेट क्लास दूसरा कौन सा, आप FD में पैसे लगाएंगे, आपको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिलेगी। आप सोने में लगाना चाहते हैं, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के स्क्वायर के बाद वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बेकार ही देता है। तो एब्सोल्यूट टर्म में आपको जरूर दिखता है कि 40,000 वाला 50,000 हो गया, पर अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे प्रीटी मच सेम रिटर्न है जितने की डॉलर डेप्रिसिएशन की है, उसमें कोई रियल रिटर्न आ नहीं रही है हमारे पास। सो गिवन दीज थिंग्स, आई थिंक देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि दिस इज द फोर्स टू रेकन विद नेक्स्ट फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। ये एक बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा एज अ कंट्री ऑल्सो। Okay, Rajiv, we were discussing in the afternoon about the value versus growth. What should the prospective buyer look at? Those who prefer value, should they look for value, say, in the financials now? Because the stocks of high-quality banks and mortgage funds have been depressed due to sustained FPI selling, but they are attractively valued now, because the rising credit demand and improving asset quality augurs well for the banks. Well, I agree to one part of the statement which you have made, which is the, as far as the asset quality is concerned. Okay. So that cleanup had been started. That cleanup started almost in 2015, and it literally got over in next 3 years. By 2018, mid-19, the cleanup was largely done and dusted with. But the problem is with the bank was then came the COVID and then the slowdown. So I don't know how much the credit growth is, because I'm still skeptical about the credit growth taking place, because the wholesale demand is still not coming up, because capacity expansions are still not happening. I mean, though in some of the industry, there are indications of capacity expansion, and PLI scheme would be probably one of the reasons why capacity expansion are going to happen. But coming to the broader question which you asked about buying into financials, I am 100% convinced about it, and as a disclosure, I do have long positions in them. The only thing is, one will need to have patience with it and be very selective in financials.
lending is a business where it is very easy to lend, but it's very difficult to recover. And we have no dearth of finance companies and all who were very aggressive. They are able to build a narrative around their growth, but they're not able to recover. And end of the couple of years, we find them, going down the drain. So when you're buying financials, you have to be far, far more, selective and be very careful of what kind of lender you are buying, because every kind of a lending institution has its own tail and headwinds at this point of time. But broadly, yes, they are good businesses. They're going to grow, pretty much good proxy to the economic growth, and one should look at some of the quality names. And in fact, some of the quality names have underperformed for the last 1 year, precisely for the reason that they were overowned by these FIs. And when FI wanted to sell, what would they sell? What they actually own, which is like HDFCs of the world. That is what they would. They would end up selling them only. Okay. So Rajiv, ऑटो सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर्स का कहा जा रहा है कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शॉर्टेज हो सकती है, एंड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है. सो ओवरऑल क्या पिक्चर देखते हैं आप? देखिए, उसमें ये जैसे कुछ साल पहले टेलीकॉम में एक चेंज आया था कि वो इन्वेस्टर के लिए तो उतना अच्छा सेक्टर नहीं था, पर जो यूजर थे उनके लिए अच्छा था. अभी सेम फेज आएगा ऑटो में कि कौन सी कंपनी में ईवी डिसरप्शन लाएगी, कितना लाएगी, कितनी देर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सबड्यूड रहेगी. तो बट उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनमें से अगर आप कंपनी देखें तो दे आर मोस्ट ऑफ देम आर कैश रिच विद अ क्लीन बैलेंस शीट कंपनी. सो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के शायद हो सकता है कुछ टाइम अंडर परफॉर्म करें, बिकॉज अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो पेनिट्रेशन ऑफ टू व्हीलर्स एक्सट्रीमली हाई इन इंडिया. फ्रेश ग्रोथ बहुत कम आती है अगर आप मंथली नंबर्स देखें. जो आती भी है वो लार्जली एक्सपोर्ट्स की वजह से आती है. तो इन माय ओपिनियन ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे ट्रांजिशन होगा, कौन सा ईवी प्लेयर स्टैब्लिश कर पाता है, कौन से अपने इंडस्ट्री में ईवी को मेंटेन कर पाता है, वो सब चीजें मैटर करेंगी. सो रिस्क है, वैल्यू है. हाँ, चांसेस आप देखिए ये बहुत ज्यादा घटेंगे नहीं, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप देखें कि ये बहुत ज्यादा यहाँ से मल्टी बैगर या बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देख लेंगे, नहीं होगा. दूसरा पॉजिटिव है कि इन कंपनीज ने अपनी ईवी सब्सिडीज बनाई हैं जिसमें ये मोनेटाइज करेंगे द फैक्ट दैट इंडिया इज अ ह्यूज ईवी मार्केट. मतलब हमारे यहाँ उतने टू व्हीलर बिकेंगे जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकेंगे, हमारे यहाँ कारें इतनी बिकेंगी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकेंगी. तो वो सारी चीजें करते हुए एक एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, और अगर आप देख सकते हैं कि आप अपने पैसे को थोड़ा अंडर परफॉर्म होते हुए देख सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड बेट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट. सो ब्रॉडली नॉट इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं है, विच आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स. सो ब्रॉडली एंड ब्रीफली ओवरऑल आपकी क्या एडवाइस होगी अभी कस्टमर इन्वेस्टर्स के लिए लुकिंग एट द मार्केट्स? ETF के थ्रू रहें अगर आप, और प्लीज अपने पोर्टफोलियो को एक बार दोबारा देखें. तो अगर आपने IBC के स्टॉक्स और दुनिया भर के जो स्टॉक्स ले रखे हैं, जो आपके उसमें जिसे हम मार्केट के लैंग्वेज में कचरा कहते हैं, जो पोर्टफोलियो बास्केट में आपके आ चुका है, उसे क्लीन कर दीजिए. वरना तेजी के बिल मंदे में आते हैं और आप सोचते रहेंगे, उम्मीद में होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी इन मार्केट. उसको क्लीन अप कर लीजिए. जो आपको अपनी पोर्टफोलियो को क्लीन अप करना है, वो मत देखिए कि थोड़े दिन पहले 10 रुपए था, आज 8 है, दोबारा 10 हो जाएगा. नहीं, बिजनेस बाय करिए, स्टे विद गुड क्वालिटी कंपनीज, गुड बिजनेसेस ऑल टुगेदर. जी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं. रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में प्रगति के संकेतों के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज मजबूती का रुख रहा. चीन की अर्थव्यवस्था को सरकार द्वारा अतिरिक्त समर्थन दिए जाने की आशाओं और अमरीकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में आशा के अनुरूप बढ़ोतरी किए जाने का असर भी बाजारों पर दिखाई दिया. हांगकांग के बाजार में सबसे अधिक 7% का उछाल आया. जापान का निक्केई 3.5% की तेजी में रहा और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1.4% की वृद्धि रही. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.3% की तेजी में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% बढ़कर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था. लंदन का फुटसी 0.2% की बढ़त पर था. फ्रांस के कैक में 0.3% की तेजी थी, लेकिन जर्मनी का डैक्स 0.4% की गिरावट पर था.
The three main U.S. stock indices and the U.S. Treasury yields rose yesterday after the U.S. Federal Reserve hiked interest rates and laid out an aggressive plan for further increase to combat inflation. The Dow Jones Industrial Average rose 1.6%, the S&P 500 gained 2.2%, and the Nasdaq Composite indices climbed 3.8%. Rajiv, even though a hawkish Fed is normally regarded negative for equity markets, history tells us that market returns following the rate tightening are good. Yes, largely because of the fact that, because market tends to one, price in, and secondly, we look at it, why is inflation happening? Inflation is happening because there is higher demand and there is a supply mismatch. And higher demand actually is happening because of the economic growth. And if economic growth is happening, corporate bottom lines are earning, then only till a point of time, till the time it doesn't start hurting the growth, markets tend to kind of do well. And secondly, this narrative is there because we have seen that most of these kind of situations have been preceded by a sectoral bull run and a huge pumping of money by the central banks globally. This happened what you're talking about, this happened between 2003 and 2006. Rather 2004 to 2006 phase also this happened. But if you look at it before that, between 2001, after the 9/11, there was a tons of money which was pumped in by Fed. So that money, once created money just changes form. It just does not get extinguished. So that money continues to come into assets, and equity is a very, very easy asset to own, very easy asset to liquidate it. The impact cost, all those things are, it's an easy asset to transact with. So that is another reason why this kind of trend is seen normally, even when the interest rates are rising. Okay. Moving on, the oil prices today climbed around 6% after the International Energy Agency, IEA, said 3 million barrels a day, BPD, of Russian oil and products could be shut in from next month. The supply loss would be far greater than an expected drop in demand of 1 million BPD triggered by higher fuel prices, the EA said in a report yesterday. Brent crude oil prices rose to trade around $104 per barrel. In intraday trade, Brent crude was trading around $103.80 per barrel, while the WTI crude prices were at $100.40 per barrel. Rajiv, now we know that the state-run Indian companies are preparing to purchase heavy volumes of Russian crude. Will this help in margin pressure being taken off the oil refiners and the benefit being passed on to the retailers by not increasing the prices? Well, I hope they do it. I don't know about their margin, but as a consumer, I would seriously want them, if not, not passing on the benefit, but keeping it at the same price. But, it's a too complex a situation for a person like me who doesn't understand oil much to give a right answer. The only thing is that, these things are very different, but I think what they will gain, they will probably try to make good of the losses which they had to incur before in last 45 days. So there have been some kind of a, cushion which they had, and now that cushion they have to rebuild. So I don't think the pass on will happen, but surely it ensures there is no major pass on to the consumer and there is no major spike in the logistic inflation which we tend to see when oil prices start to rise on a pump level. और अब चलते हैं सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 395 रुपए बढ़कर 51,530 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। मई अनुबंध वाली चांदी भी 930 रुपए की बढ़त से 68,235 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में सोना तेजी के साथ $1,936.90 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $25.40 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली आपको लगता है कि सोने में तेजी बनी रहेगी? चांसेस ये है कि अभी जब तक ये अनसर्टेनिटी है, आई थिंक इट विल आउट परफॉर्म फॉर सम टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। Thank you for being with us, Rajiv. And before we close, the headlines once again. Domestic stocks climbed around 2%. Sensex finishes above 57,800 mark. Nifty closes near 17,300. The rupee appreciates 46 paise to deal below 76 rupees per US dollar. Global equity indices log robust gains and Brent crude prices hover around $104 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.